Okay, good evening everyone, and welcome you all to this session on the auspicious day of Teachers Day today. And I am going to continue the Excel session. And today we are going to look into assignment that I have given on count function, as well as, if the time permits, we will also look at the sum function today. Okay, so I hope my screen is visible to everyone. I've shared my screen, and you can confirm if you can see my screen. I hope आप लोग को screen दिख रहा होगा. Okay, if you can see my screen. Yes, Data sir. validation, yes. Yes, sir. Yeah. So you learn new things with me. My purpose is to teach you new things which you don't know. And even if you know and if you're forgotten, you're going to revise all these things. Okay. Now, I had given this assignment. I'm going to start with this. Let us discuss the solution one by one. Okay, of this assignment. So, for those who are new to this session, what we are going to do is we have a data set. हमारे पास एक डेटा है. ठीक है, we'll study till 10 o'clock, then we will have some fun for 10-15 minutes and then we will end up this session. Okay. चलिए, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. So we have year, we have month, we have date, we have parts, we have sales, and we have salesman. Okay, ये हमारे पास data है. It's a sales data basically for a company, dummy data, and you can see the length of the data. A lot of data is there. 304 rows तक का data है ये, starting from row number 10. ठीक है. So now we want to do some analysis. हमें इसमें कुछ analysis करना है. So I've already drafted some questions on the right hand side, which I am going to read, and we are going to work on that question. Some of you had already sent me the solutions. I was not able to look at it, but you can read, you can check your answers now when as I am solving them. Okay, and if you would like to tell me the answer, you can also participate in telling me the answers. Okay, so pehla question hai, how many times sales has been made in the month of April? A very simple question which needs to be answered. How many times sales has been made in the month of April? So we have this column of months, and if you see there are months which are there appearing multiple times. We need to find out how many times April is appearing. Okay. So now I want all of you to give me the answer in the chat box, which formula to use for this. Okay, first we are talking about formula, then I will ask you the syntax. Okay, so answer Harsha has given is 25. Okay, Chetan ji is saying count A. Okay, Harsha is giving count F. What about others? क्या फॉर्मूला काम में लगाएंगे हम? क्या लेंगे काम में हम लोग इसे ढूंढने के लिए? युवराज and Ankit, if you can participate in the discussion. So what formula we need to apply? Chetan ji, you are saying count A. है ना, count A तो will count anything. It will count all the cells in the range. है ना? अगर if I put count A, मैं थोड़ा सा इसका font size बढ़ा देता हूँ इस cell का. Now if I type count A, basically count A counts the non-empty cell. And if I select this entire column month, because I want to find out the in the column month how many times April is coming. So now it is giving me the answer is 92. It is giving me the answer as 92. Yeah, but 92 times April cannot come because the entire data, sorry, I have not selected the entire data actually. The data is still 304. So let me modify the formula and put 304 in the end because there was blank cell, so it skipped the other 304. 293 basically. 293 is the number of cells which are there in this. Okay, so now you are right. Count if we have to use count if because there is a condition. हमें condition की basis पे निकालना है कि कितनी बार April आ रहा है. So there is one condition. If there is a single condition, then we can use count if. ठीक है? So let me use count if now. And as I use count if, you will be able to see you will get the right answer. चलिए, तो अब हम लगाएंगे count if. तो यहाँ पर I will going to make the formula of count if. Count if asks for two things, range and criteria. Now, yesterday I mentioned in my session that every time when you apply any formula, you have to select the range. It is very cumbersome process. Either you will have to type, जैसे यहाँ पे हमको लेना है
C11 to C304. So I have to type it every time. I don't like this. Okay. So is there any way out where I don't have to type and I just type the month name, month, and it selects the entire column? Is there any way I can do that? And I know there are people who will be able to answer this because, yeah, Mayur is there now. Can you share file? Okay, I am sharing the file Mayur with you. One more time, I am sharing the file. Just give me 1 minute. So, guys, what is the way out? What you will do? What is the way out? Anyone knows, okay, how we can name a range? How we can give a name to any range? How can we give name to the range so that we can use? We can just refer to the name and it will give me the name. Anyone who can answer this? Okay, I've shared the file again in the create table or name range. Right. Now, what we will do is, guys, we are going to select the entire table. Okay, so control A करेंगे, सारा table select होगा. You will select the entire table, entire data in the table. So we will select the entire data in the table, and now the entire data is selected. Now, after selecting the entire data, what I will do is I will press the shortcut here. I'll show you how you have to give a name to a range. You will go to formula tab, formula, and in the formula you will have name manager. Okay, name manager, and in the name manager you have create from selection. Create from selection. So when you click on create from selection, it will say create name from the values in the top row or right column. So we will select top row. We have selected the top row which has a header. So I want it to give names to the top row to this column based on the row. So I'll select top row and I'll click on OK. Now what has happened? Okay, I will repeat the step one more time, but let me show you what has happened. Now we are coming to an empty cell. These are blank cells. I have come to a blank cell and I am increasing their size little bit. Okay, now what I will do, see what happens. I'll type equals to and then name. Or what was the first column? First column was year, sorry. So I'll type equals to year. As I type year, do you see the year coming into blue color? Okay, it is not a function, it is a table. It is a table basically, it is a name, range. So I'll say, I'll press enter. Now you see a list of year coming. Similarly, when I type month, you will see a list of months coming. When I type product, we don't have the name column with the name product. We have date, right? So date coming. Now what all columns I have? Parts, sales units and salesmen. So I'll type is equal to parts, sales unit. So is equal to sales unit and salesman. So I was able to generate the entire table once again. Okay, but the headers are not coming. So what I'll do, I'll say year and I'll open a bracket and no, headers will not come here because we have selected only the data. Headers will not come. You can give the headers manually. Okay, this is one way. Now, what is the benefit of this? This year will refer to the entire list. Year will refer to the entire list. Month will refer to the entire list. Date will refer to the entire list. Parts, sales units, and salesmen. Now, when I want to use them into a formula, what I will do is
I will write the formula here. How many times sales has been made? But I am not seeing the table now. Okay, the table is not visible. So what I'll do is I'll say equals to count if. How many times sales has been made in the month of April? Now April will come to which from month. I will select month. I'm just typing month and I'll put comma. And now I will type April in inverted commas. And the answer is 25. So Harsha, your answer was right. Correct, the answer is 25. So everyone, have you understood or do you want me to repeat it? Have you understood what we just did? How I got this 25? Have you understood this? Instead of typing April, yeah, we can set a cell also. Yes, that is also possible. So instead of typing April, you can give a reference of the cell which is having April. So we have to go to the table and see the column, the cell number. So C16 is April. C16, you can type C16. So it is, or if I type April over here, April, I can give O14 as a reference. So I will select O14 now. O14. O14. 25. Now instead of April, if I type May, it will give me some other number. Maybe they are K, June, okay, July, 24, right? Jan, 0. January, I should type January 25. Okay. And if I put nothing here, it will give me 0. So I'm getting 25. Clear? No, this is not data validation. This is called as naming the range. This is called as name range. Now I'll repeat. फिर से एक बार करते हैं. Name range. What I've done is called as name range. So let me do it again. So what I did is, we already have a table. Achha, first tell me, is this a table? Is this a table? Yes or no? Tell me in the chat box. ये जो आपको दिख रहा है, is it a table or it is not a table? Is it a नो table सर. or not a table? No. Why no? सर ऊपर टेबल डिजाइन लिखा हुआ नहीं आ रहा. करेक्ट, टेबल डिजाइन लिखा हुआ नहीं आ रहा. ये टेबल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये टेबल है नहीं. इट इज नॉट टेबल. इट इज नॉट टेबल. करेक्ट. So how do you create a table? What is the shortcut key to create a table? Everyone? Control+T. Control T. So you press Control T, it will automatically select, but I don't want this data for task submission to be selected. So I will just press Shift and down arrow. I will select it manually. So my table is ranging from B10 to G304. I'm manually typing 304. Now I click on OK. Now this is the table. Actually, this is the table. And one more thing I will tell you now, table design is coming. And you can change the color of any color of this table. Okay, you can remove the banded rows also. If you want to keep the banded rows, you can keep. If you don't want to keep, you can. If you want to add the total also, you can put total also, whatever you can do. Okay, so this is now a table. Earlier it was not a table. Now it is a table. Correct. Now what I want you to understand is कि जो ये टेबल है, ठीक है. When I scroll down, अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. When I scroll down, what do you see? Do you see the headers of the table? Where do you see the headers of the table? Table का header कहाँ गया? Heading किधर गया है? See, when I'm scrolling down, have I put free space on the Excel? Have I put the free space? Free space मैंने लगाया या नहीं लगाया? पहले ये बताइए. Have I put free space anywhere? Is it free space?
हर्षा? नो सर। देयर इज नो फ्री स्पिन। ठीक है, तो फ्री स्पिन नहीं है, तो No, sir. व्हेन आई मूव डाउन, I should not be able to see the column headings, but I am able to see. How it is possible? ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा चलो मैं बाहर आ जाता हूँ। I come to this cell. Now what do you see? What do you see on the headers? Are you able to see the headers, table headers? नो सर। No. We are able to see A, B, C, D, E only. यस। है ना? किसी को भी हेडर तो नहीं दिख रहा है ना अभी? नहीं दिख रहा है ना हेडर? चलो अब टेबल No. के अंदर आते हैं। अभी क्या हुआ? We can Yes. see the heading. क्या दिख रहा है? We can हेडर्स see दिख the रहे थे। heading. हेडर्स दिख रहे हैं। तो ऐसा कैसा कि कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है? मिस्टर इंडिया है क्या? हाउ इट इज पॉसिबल कि अभी दिख रहा है अभी गायब, अभी दिख रहा है अभी गायब? कैन एनीवन गेट टू द लॉजिक ऑफ हाउ इट इज विजिबल एंड व्हेन इट इज विजिबल एंड व्हेन इट इज नॉट विजिबल? कैन एनीवन टेल मी? सर अगर सेल सेलेक्ट करते हैं अपन टेबल के अंदर तो अपन को विजिबल हो रहा है। चश्मा लगाते तो दिखता है, चश्मा हटा देते तो गायब हो जाता है। Table When you are property. inside, when you are inside the table, when you are inside the table and you move down, you will see the headers on the merging with the header. देखो ये कॉलम ए है ना? ए में टेबल का हिस्सा नहीं था, ए तो ए ही दिख रहा है, लेकिन ये बी सी डी दिख रहे हैं। जैसे ही मैं टेबल के अंदर जाऊंगा ये हेडर्स दिखेंगे। ठीक है, आई विल बी एबल टू सी द हेडर्स ऑफ द टेबल। दिस हैपेंस व्हेन यू हैव द डेटा इन अ टेबल। दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल। ठीक है, तो हमने टेबल बना दिया है अभी। अभी देखो क्या होता है ना, आई एम पुटिंग द फॉर्मूला अगेन। ये 25 हटा रहा हूँ, अगेन आई एम टाइपिंग द फॉर्मूला काउंट इफ, and now I want to select the range. What range I want to select? I want to select the month name, month column. So instead of typing the month column B11 to B203, what I will do is I will type the table name. Okay, because now it is a table, so it is called table 1. By default any table in Excel is called table 1, but you want to confirm कि ये table 1 ही है या क्या नाम है इसका, तो what you will do is you will click on this table, you will go to table design और यहाँ आपको दिखेगा टेबल नेम। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? इसका नाम मैं चेंज करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल इट एज सेल्स टेबल, सेल्स। ठीक है, सेल्स लिख देता हूँ मैं, सेल्स। आई हैव चेंज द नेम ऑफ द टेबल, द नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, सो आई विल से सेल्स टी, सेल्स टी। ओके, I've given a new name to this table. Now let me type the formula here again once more time, one more time, equals to count if, और अब मैं लिखूंगा टेबल 1। तो टेबल 1 नहीं आ रहा है बिकॉज आई चेंज द नेम। व्हाट शुड आई राइट नाउ हियर? सेल्स Sales T. टी। तो सेल्स टी इज शोइंग अ छोटा सा टेबल का आइकन। You can see it now. So when I type sales, last wala sales T is showing me a table. It is a table. These are all range. These are all name ranges. So I'm selecting table. So what happens is it select the entire table, but I don't want the entire table to be selected. What column I want to select? Tell me which column I want to select? Column B. कॉलम सी। Column B. उसका नाम क्या है column का? Year. Month. Year. Year column. Year नहीं, month सर है ना? मंथ कॉलम जो है ना अपन को सी में है वो। हाँ वो सी में है, बी नहीं, सी में है, और सी के कॉलम का नाम है मंथ। मुझे अप्रैल ढूंढना ना, तो वो तो मंथ में मिलेगा, ईयर में कहाँ में मिलेगा? तो Yeah, मंथ आई वांट month. टू, हाँ मंथ। सो सेल्स टी, नाउ यू विल पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख देंगे क्या? मंथ। एज यू स्टार्ट टाइपिंग मंथ, डू यू सी अ प्रॉम्प्ट मंथ दिख रहा है आपको? टैब प्रेस करेंगे, क्लोज द ब्रैकेट। नाउ विच मंथ, विच कॉलम इज सिलेक्टेड नाउ? कॉलम कौन सा सी। कॉलम सेलेक्ट हुआ है? Month column. Month column is selected. Okay, now what, which month do you want from the month column? April. अप्रैल।
April. Now there are multiple ways of getting to April. Either you write April, or you select from the column, or you select from anywhere. Okay, so I've written April over here. I'm selecting from here. I'm getting the same answer 25. Are we getting the same answer 25? Yes, sir. Understood? Now, if I change the month from April to let's say July, will the answer change? अगर मैं यहाँ पे अप्रैल की जगह जुलाई कर दूं तो क्या यस आंसर सर, चेंज हो जाएगा. Yeah. 24 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला को डायनेमिक बना दिया. करेक्ट. So यस let us सर. do the next So question. what is this called when we are changing the reference in O, column O, we are changing April or we are changing May. So what is this called? This is called as the referencing. So we have done a reference, Okay. and whenever you are changing the name, you are actually changing the, you are not changing the reference, but you are changing the value in the reference. So based on the value, it is changing the answer, nothing else. Okay. Okay. But if I would have not given a reference, I would have typed April manually. Then by changing the reference here, nothing is going to happen Yeah. because it is Correct. not taking any value from that cell. So I need to Yeah. take the reference from the cell. So O14 I'll type. And now it will give me the result based on what I type. Correct? Yes. Next question was, how many sales have happened in on the date 6th and month July? Now you have two variables. Now you have two conditions कि डेट भी हमें 6 चाहिए और मंथ हमें जुलाई चाहिए. ठीक है. अब जो लोग को एक्सेल नहीं आता ना, वो क्या कहते हैं, सर इतना क्यों फॉर्मूला याद रखना, आप क्या करो फिल्टर लगाओ. मैं बोलता हूँ वैसा करो, जुलाई में फिल्टर लगाओ और 6 पे फिल्टर लगाओ और देखो आंसर आ गया. कितनी बार आ रहा है? 2 बार बस. और क्या चाहिए, मिल तो गया आंसर. इज इट राइट? इट इज द राइट यस सर. अप्रोच. आंसर इज राइट, बट इज इट द राइट अप्रोच? नो सर. अप्रोच इज नॉट राइट ना. अप्रोच ठीक होना चाहिए. आंसर तो कैसे भी ले आएंगे, सही तरीके से आंसर लाना इज इम्पोर्टेंट. तो अभी क्या करेंगे, कैन वी यूज काउंट इफ? नो सर. कैन वी यूज द सेम फॉर्मूला हियर? नो सर. हाँ, नो. यस और नो, कैन वी यूज द सेम फॉर्मूला? नो सर. नो. व्हाई नो? सर क्योंकि दो कंडीशन है, काउंट इफ में सिंगल कंडीशन ही लग सकती है, काउंट इफ्स लगेगा आईएफएस. करेक्ट. चेतन जी आप भूल गए सब कुछ. काउंट इफ will only have will only allow one condition. Now we have two conditions. हमें मंथ भी देखना है और डेट भी देखनी है. तो काउंट इफ से काम नहीं चलेगा. किसकी जरूरत पड़ेगी? काउंट इफ की. ठीक है, काउंट इफ. नाउ व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर काउंट इफ? काउंट इफ लिखेंगे कैसे? नो प्रॉब्लम. काउंट इफ व्हाट यू विल डू, you will write criteria range 1, criteria 1, range 2, criteria 2. What is the first criteria? पहला क्राइटेरिया क्या है? डेट. डेट. डेट या मंथ कुछ भी पहले ले सकते हैं, पहले डेट ले लेते हैं. तो हम टाइप करेंगे डेट. अभी देखो डेट लिखा और ये डेट कॉलम सिलेक्ट हो गया. मैंने टेबल का नाम नहीं दिया, सेल्स की करके नहीं दिया, फिर भी डेट सिलेक्ट हो गया. क्यों? क्योंकि वो रेंज का नाम ऑलरेडी मैंने दे रखा था इसके लिए. तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो जैसे जा सकते हैं. whichever you find suitable you can use that. ठीक है. Either you can use the table route or you can use the direct column route also. Column बहुत सिंपल है, आपने टाइप करा डेट और डेट कॉलम सेलेक्ट हो गया, एंड you know also what is happening. ठीक है. Now what date I want to check? 6. Which column has 6? Which column has 6? Which cell has 6? Sorry. D11. 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 So I have written D11. From the table itself I am selecting the data. Now what is the next thing I want to look for? Which month? July month. मंथ. So I'll type month. Simple month type करूंगा. और जुलाई भी किधर है?
P11 means, so I can type P11. Now you can read out from this date, from this formula tab, okay, what this formula is going to give you. This formula is going to look at the date column and look for D11. D11 has 6. So it is going to look for date number 6, and then it is going to look for July month, and how many times date 6 is coming and July month is coming, it is going to give me the result. So what should I get? I should get 2, and I'm getting 2. Is it clear? Yes, sir. Yes. ठीक है? सर तो इसके लिए आ अपन गया? को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना, पहले टेबल। नहीं, देखिए टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, हाँ बिल्कुल, और बिना टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किए भी हो सकता है। मैं बता देता हूँ फिर से। ये किसने पूछा है क्वेश्चन वैसे? रिमेश, हाँ जो मैंने रिमेश, लेट ज्वाइन करा था। हाँ इसलिए सुन लो। मैंने ये डेटा एक नई शीट में कॉपी कर दिया। अभी हर्षिता ने भी अभी अभी ज्वाइन किया है। हर्षिता, यू विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस, सो आई एम रिपीटिंग इट। और जो लोग पहले से थे ना, वो लोग का भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जो लोग लेट आए उनके लिए, तो यू शुड थैंक द पीपल हु आर कमिंग लेट। उन लोगों के लिए तुम्हारा फायदा हो रहा है। चलो, तो now I have just copied the column heading. अच्छा, how do I resize the column? ये थोड़ा column size कितना हो जाए? Alt H O I. Alt OCA. ऑल्ट HOI सर। अरे मैं लिख रहा हूँ ना, Alt H OI। auto fit column width. It is called auto fit column width. उससे क्या होता है कि ये अपने आप अपनी जगह बना लेते हैं, जिसको जितनी जगह चाहिए वो ले ले। अभी इसकी छोटी छोटी कर दी मैंने जगह। नाउ यू वांट टू एडजस्ट देम टुगेदर, Alt H O I, डन। नाउ व्हाट आई वांट इज, ये जो टेबल है ना, पहले मैं एक काम करता हूँ, ये सारे नंबर को डिलीट कर दो पहले से जो हमने बना के, कंफ्यूजन नहीं होगा। आई गो टू नेम मैनेजर, इतने सारे नेम्स क्रिएट कर रखे थे, उन सबको डिलीट कर देते हैं। सेल्स टेबल को भी डिलीट कर देते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो टेबल है ना, नेम रेंज में। नाउ वी डोंट हैव एनी नेम रेंज। Yeah, I will create a data validation for month. Yes, yes, we'll do that. मैं वो भी बता देता हूँ। How to name data range once again? Yeah, I'm doing that, हर्षा। ठीक है, now look everyone, वापस से हो रहा है ये recap। ठीक है, फिर से पुनः दोबारा एक बार once again हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए सब लोग। Now what I'm going to do is I'm select this entire data, Control A से सारा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम जाएंगे फॉर्मूला टैब में, और फॉर्मूला टैब में एक नेम मैनेजर, एक टैग जैसा होता है, नेम टैग। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, Ctrl+3 इसका शॉर्टकट की है, तो आप Ctrl+3 भी प्रेस कर सकते हैं। सॉरी, Ctrl+3 से तो ये हो जाएगा, Ctrl+Shift+3 इज द राइट शॉर्टकट। अभी मैंने नेम मैनेजर पे क्लिक करा, नाउ आई सिलेक्ट न्यू। सो इट इज सेइंग ईयर, और ईयर का मतलब क्या होगा? CH से लेके C1 से लेके CH, but I don't want only one name to be given. I want all the columns should get their respective names. वो करने के लिए क्या करना होगा? You have to go to create from selection, because you already created a selection. You already selected the entire table. Ctrl+Shift+F3 is the shortcut key. Ctrl+Shift+F3. Create names from the values in the top row. We'll select top row. Now we'll click on OK. Now what has happened? I'll tell you. I'll type year over here, month over here, date over here, the parts over here, sales unit over here, and salesman. This is the table which we have. Okay? It is a blank. Now I'll type year is equal to year, and you'll get all the values from the year. Similarly, if I type month, you'll get all the values from month. Okay? Date, all the months, all the dates. Parts,
all the parts. Sales unit, all the sales unit. Salesman, all the sales. लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें क्या, अभी मैं आके मान लो इसको डिलीट करना चाहूँ, आई एम नॉट एबल टू डिलीट एनी ऑफ द, व्हाई सो, बिकॉज दे आर इन एरे, दिस इज कॉल्ड एज एन एरे। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है आपको, दे आर नॉट टाइप, दे आर फॉर्मूला। so what you would like to do is to convert them into normal numbers, normal text. Control C copy, control shift V paste as values. Now there are no formulas, there are no formulas now, ठीक है। चलो ये आपको दिखाने के लिए था, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। चलो आई एम गिविंग यू अ केस स्टडी, अब आपको मुझे आंसर करना है। आई वांट टू फाइंड आउट दैट इन द ईयर 2022, in the year 2022, how many times LED was sold by Alice? In the year 2022, how many times LED was sold by Alice? मुझे ये पता लगाना है। What formula I should use? is equal to count ifs. Count ifs, because there are more than one condition. What is the first condition? Year. Year. So आप year type करेंगे चुपचाप, simple year. What is the year I want 2022. to look? 22. I am selecting J4, comma. Next, what is the criteria? Parts. So I select parts, comma. What I am looking in the parts? LED. I select J5, comma. What is the next thing I want to test on? Salesman. I type salesman. And this salesman I am looking for Alice. And I will close the bracket. I am getting 1 as the answer. Is it correct? क्या 2022 में Yes. जुलाई में एक ही बार एलएस में सेल किया है? Yes. One time only. One time only, है ना? It is showing one time only. हाँ, Harsha has given the right answer. Very good, Harsha. Now let us check whether this answer is correct. So how do I check? I'll put a filter. I'll put a filter. अब देखो ये जो filter है ना, ये लगाने का भी पुराना तरीका हो गया. Now there is a function of filter, है ना? वो फंक्शन हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ाऊंगा। कल आने के लिए कुछ वजह होनी चाहिए, कल हम फिल्टर फंक्शन देखेंगे। सो व्हाट इज द मंथ आई डोंट वांट, आई वांट पार्ट्स। सो पार्ट्स में कौन सा चाहिए? एलईडी। सो एलईडी, एलईडी, आई विल सेलेक्ट एलईडी एंड आई विल सेलेक्ट एलिस, एलिस, एलिस। सो ओनली वन टाइम इन जनवरी 5th को 600 यूनिट्स ऑफ was sold by Alice. Correct. Now suppose I do some manual changes, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें भी लिख देता हूँ LED, और यहाँ पे भी LED है 2022 में। अब देखो 2 हो गया आंसर, है ना? 2 has, it has become 2. यहाँ पे भी I'll make 22. It has become 3 now. So as I change my table, my answer is going to change. Correct. So that is counted. So I hope now everyone is very much clear and confident about using count functions. Are you all? सर एक बार Honestly, नेम मर्जर वाला दोबारा बता देंगे आप? हाँ बता देता हूँ। दोबारा नहीं, अब दोबारा हो जाएगा ये, बता देता हूँ। लेकिन नेम मैनेजर एक देखिए साथ कैसे सेलेक्ट करा था अपन ने? क्या किया था। एक साथ सेलेक्ट करा था ना नेम मैनेजर में अपन ने? हाँ हाँ हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो ये ईयर है, ये मंथ है, ये डेट है, ये पार्ट्स है, ये सेल्स यूनिट है और सेल्समैन है, ठीक है। अब मैं ना इनके नाम चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बार ये नाम ऑलरेडी दे रखे हैं। मैं हिंदी के नाम दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ महीना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिनांक। पार्ट्स को क्या बोलते हैं? औजार। औजार।
और सेल्स यूनिट बिक्री है बिक्री क्या? बिक्री 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 बिक्री, हाँ बिक्री, बिक्री। और सेल्समैन को बेचने वाला आदमी। बेचने वाला बेचने वाला, ठीक है। चलो, अब ये हो गए। अब हमें क्या करना है, इन सब के नाम से हमें इनको रेफर करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल सेलेक्ट द एंटायर टेबल। कंट्रोल ए से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है ना, कंट्रोल ए हैव यूज्ड टू सेलेक्ट दिस, कंट्रोल ए आई एम डूइंग। एंड नाउ व्हाट वी विल डू, what we are going to do by using control A is, what we are going to do by control A is, uh, control shift F3, I'm typing the shortcut key. Now we will use a shortcut, control plus shift plus F3. So again, control A, control shift F3. As you do this, तो क्या आएगा, create name from selection, create name from selection. And we have already selected what, top row और right column को भी ये टिक कर रहा है. I don't want to have a right column, मैं top row ही चाहता हूँ. top row का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे लिखा है साल, महीना, दिनांक, औजार, बिक्री, बेचने वाला, इसको ओके कर दिया. Now what happens is, when you go to formula bar, formula tab actually, and go to name manager, you will see a list of the names I have given in the sheet. अब इसको ध्यान से देखना और इसको समझने की कोशिश करना कि ये क्या कहना चाह रहा है. रिमेश, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, बताओ. सर सब आ गए रिमेश, नेम मैनेजर में। सारे नाम आ गए. यस सर। उनकी वैल्यू भी आ गई और उनका एड्रेस भी आ गया. यस सर। ठीक है. अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है, एक बार केस स्टडी ले लेते हैं लास्ट. हमें ये यस पता सर। लगाना है कि 2023 में एलन एलन ने हार्ड डिस्क अप्रैल में कितनी बार बेची. हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर, हाउ मेनी 4 कंडीशंस आई पुट नाउ, 4 हाउ मेनी कंडीशंस आई पुट, जल्दी बताओ. 4 4, there are 4 conditions. Year is 22, salesperson is Alan, product is part is hard disk, and month is April. I want one single answer. What formula I will use? count ifs. Count it. So what is my first criteria? Range. ईयर। साल. अब मैं टाइप करूंगा साल, हिंदी वाला टेबल यूज कर रहा है, साल, कॉमा. कौन सा चाहिए साल में, 2023। 2023, S5 के अंदर है. दूसरा क्राइटेरिया क्या है, बेचने वाला. बेचने वाला, बेचने वाला कौन है, एलन. एलन कहाँ है, S6 में. तीसरा क्राइटेरिया क्या है, हार्ड डिस्क. औजार। औजार, हार्ड डिस्क कहाँ है, S7 में. और आखिरी, महीना, कौन से महीने में बेचा इसको, S7, S8 पर. S8. Correct. Now once I have given, see what, how beautiful, colorful it is looking. There are 4 columns, sale, year, month, part and salesperson. चारों हमारे जो क्राइटेरिया थे वो यहाँ फिट हो गए. एंड व्हेन आई प्रेस एंटर, oh I get 0. दैट मीन्स क्या ऐसा कॉम्बिनेशन है ही नहीं. यस इज सर। इट, इज इट, लेट अस चेक. अब चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए अगेन यू हैव टू अप्लाई फिल्टर.
ठीक है, सब जगह फिल्टर लगाना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट एल इज द शॉर्टकट की, तो फटाफट से लगाते हैं Sir, hard disk का spelling I think it's not correct. इज इट सो? हार्ड डिस्क तो Yes. अच्छा, हाँ हार्ड में डी नहीं आया, करेक्ट, हार्ड डिस्क, बट आई करेक्टेड द स्पेलिंग नाउ। Then there is no value. हाँ, नाउ लेट अस चेक। तो 2023 सेलेक्ट करेंगे हम लोग पहले, फिर हम अप्रैल सेलेक्ट करेंगे, फिर बेचने वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, There is एलन। no L. हाँ, देयर इज नो वैल्यू। 2023 में एलन ने कुछ भी काम नहीं किया है। देयर इज नेम इज नॉट विजिबल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, करेक्ट? तो आर आंसर इज करेक्ट। नाउ इफ आई डू एलन की जगह पे एलिस, एलिस में भी नहीं हुआ, 2022 कर दूं तो भी नहीं आ रहा, एलन करते हैं। वन in 2022 he sold one hard disk in the month of April. If I do LED, I'm getting zero. If I do RAM, I'm getting one. So see how these formulas can be put to find answer to questions which can be any random questions. यस सर। है ना? तो दिस इज व्हाट यू शुड लर्न इन एक्सेल। यही चीज सीखना होता है हमें कि फॉर्मूला तो कोई भी सिखा देगा आपको, आप खुद से भी सीख सकते हो, यूट्यूब है, वीडियोस है, पीडीएफ है, बट एप्लीकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। हाउ डू यू अप्लाई द फॉर्मूला, हाउ डू यू यूज द फॉर्मूला? अपना दिमाग इस तरीके से चलना चाहिए कि हाँ वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आ जाए वी आर एबल टू सॉल्व इट। यस हर्षा। So, like you have inserted these four commands 2022, Allen, RAM, April. तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे अपना कमांड चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आंसर भी चेंज होता रहेगा, वैरी हाँ करेक्ट, करेगा। हाँ But I wanted to know if instead of writing, I don't want to write over here. I want to, like you had taught us the drop down. करेक्ट So, करेक्ट। As I'm coming to it now. Now, okay. very good thing she has asked basically for the benefit of all. आज जो लोग भी ये सेशन अटेंड करें ना, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट, सो यू शुड थैंक मी फॉर दिस, ठीक है? वैसे एंड थैंक यू फॉर कमिंग एक्चुअली, बिकॉज सी इफ आई डोंट गेट पार्टिसिपेंट देन व्हाट इज द यूज ऑफ कंडक्टिंग अ सेशन? आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, मुझे तो ये सब आता ही है, और ऐसा भी नहीं कि मुझे प्रैक्टिस करना हो ताकि मुझे याद रहे। तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 10 years नाउ, तो नींद में भी कोई उठ के पूछ लेगा तो आई कैन आंसर। बट व्हेन पीपल कम टू द सेशन आई गेट दैट फीलिंग कि हाँ चलो आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। सो नाउ हाउ डू वी क्रिएट अ ड्रॉप डाउन? ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन कि सर टाइप नहीं करना पड़े, यहीं पे ऑप्शन आ जाए, और हम एक काम करेंगे, वी वांट टू हैव एन ऑप्शन ऑफ ईयर, ईयर, and then month over here, and then part over here, and then the salesman. ठीक है? So I want these fields to be available so that I can choose from the options and the answer should change over here. This is what we want. Correct? Yes, Harsha? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So now see what how this will be done is very important. Huh? Now I am writing the shortcut key for this also. It is Alt plus D plus V plus V. See, once you fall in love with Excel, then you will not love anyone else. Okay, so you have to fall in love with Excel while working with Excel. आपको मतलब बे इंतहा मोहब्बत करनी पड़ेगी इससे, तब जाके आपको ये सब चीजें आएंगी। अगर आप नहीं कमिटेड नहीं होगे ना, तो फिर वो वन साइडेड रिलेशनशिप हो जाएगा। So I don't want anyone to get into one-sided relationship where you other person is not taking efforts, you are taking efforts. If you take effort, other person will also take effort, and then you will get your love will flourish actually, है ना? तो वो करना है हमको यहाँ पर। So what I was saying, this is name range and this is drop down data validation basically. Chalo, now we want to create a validation here, drop down here. So I'll say Alt A V V. It will open a dialog box. It will open a dialog box, और मुझे
इस डायलॉग बॉक्स को समझ में आ जाना चाहिए क्या बोल रहा है. सेटिंग, validation criteria, what does this validation mean, and you don't have to learn all these steps, क्योंकि आप आज मैं सिखा दूंगा, तुम लोग सीख जाओगे. लेकिन मैं आपको ये चैलेंज करके बोल सकता हूँ, and I've written this post also today morning. I posted about this 72-hour rule. There is the rule of 72 hours which says that if you read anything for the first time, or if you look at someone for the first time, or if you go to any place for the first time and you don't look at that person again, or you don't go to that place again, or you don't read that thing again, or you don't do it again, you don't listen to that song again, if you have heard any song in 72 hours, then it will become zero in your memory. आप भूल जाएंगे, है ना. तो आप ना भूलें इसके लिए you have to revisit all these things in the next 72 hours. That means 3 days. 3 दिन के अंदर आपको ये करना होता है, और नहीं करोगे तो मेमोरी जीरो लॉस हो जाएगा आपका. ठीक है, तो यू हैव टू रिवाइज. अभी आई नो देयर आर पीपल हु हैव अटेंडेड माय प्रीवियस बैचेस, दे आर कमिंग अगेन. व्हाई? बिकॉज उनको पता है कि हम खुद से नहीं कर पाते, तो बैच में आने से रिवाइज हो जाता है एंड वी गेट रिकॉल्ड. So that is also important. That is very good, in fact, क्योंकि you are taking out time for yourself and for your knowledge, understanding. So we are selecting list select करेंगे and we need to give a source. अब देखो year में there are only 2 years. I can type also 2022, 2023. So see what happens is now there is a drop down. I can select any year from this. I don't have to type. Clear? मंथ में भी हमें यही कर सकते हैं, लेकिन 12 महीने होते हैं, 12 महीने के नाम कौन लिखेगा. सो व्हाट यू विल डू, ऑल्ट ए वी वी, यू गेट द सेम डायलॉग बॉक्स. फ्रॉम एनी वैल्यू यू विल गिव अ लिस्ट. मतलब वी आर पुटिंग अ वैलिडेशन क्राइटेरिया कि सेल के अंदर वो ही वैल्यू आएगी जो इस लिस्ट में होगी. और लिस्ट क्या है, महीना. महीना ही टाइप कर देते हैं जो हमने नाम दिया था ना. सी, वंस यू डिफाइन द नेम, हाउ वेयर ऑल यू कैन यूज, यू कैन नॉट इमेजिन दैट. ठीक है, अब मैं महीना यहाँ लिख रहा हूँ, क्या महीना से बन जाएगा ड्रॉप डाउन. लेट्स सी, महीना ही आ गया, है ना, बना ली. व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू इज, आई थिंक यू हैव टू पुट अ, हाँ अब देखो, अभी व्हेन आई जस्ट क्लिक्ड ऑन इट, ओके, व्हेन आई जस्ट क्लिक्ड ऑन इट, अभी को दिखा रहा था, इट वाज शोइंग अ सिलेक्शन टू द मंथ. आई थिंक, wait, I have to type equals to and then type the name. Now are we getting the options? Tell me, are we getting the options? Month name आ गए अब? हाँ ना तो बोल दीजिए. Yes, sir. Yes, we are getting the month So name. what we were missing out over there was an equal to sign. Exactly. Now same for the parts. You can write or the name, actually the name, okay, and you have to put a equals to. Even if you don't put a equals to, you should make sure, see, I've not put equals to Harsha now, but you should make sure that you should have the dancing bars nearby the column. It makes sure that the column is selected as a source. Now you click OK, and now you will have the list. You should have the list. Again I'm doing it, maybe kuch to gadbad hai. This list is selected, then it should come. It is not coming. Let us put equals to now. Equals to Azar. Now I have got the list. Okay. So equals to लगाना पड़ेगा इसका मतलब when you are typing it. Otherwise you can select the list. And last, salesperson. So equals to salesperson. So alt AVV and list source. Either you select manually. See, even if you select manually, it is giving you equals to बेचने वाला automatically से नाम उठा लिया है.
and I get the drop down over here. Now, based on my selection, I will get the answer from here. Based on my selection, I'll get the answer. सर आपने फॉर्मूला गलत लिख रखा है, ऑल्ट ए वी वी होगा, ऑल्ट डी वी वी लिखा है आपने। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। Now it is fine. Alt ABV. Thank you for correcting me. चलिए, तो अभी 2022 अप्रैल की जगह हम कर लेते हैं जनवरी। इंग्लिश, स्क्रीन और एलईडी और एलिस करते हैं। एलिस, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? What is wrong? I'm getting 22 January LED Alex. इससे आंसर आना चाहिए था, because there are instances where this sale has happened. कई बार स्पेस का भी चक्कर होता है, इसलिए भी आंसर नहीं आता है, so we need to check that also. एक मिनट, let me check where we are getting wrong. 2012 January hard disk Alex. One time it was sold in 2022. ठीक है, इसको भी एलिस कर देते हैं बार के लिए, और इसको भी एलिस कर देंगे। It should be 3. I should get 3 as the answer, but I'm not getting anything as the answer. Now why? We need to work out. So see, first is the year. Year में I selected You have selected parts as LED and you were checking hard disk. sorry. You were checking hard disk, but the selection is LED. अच्छा, okay. LED. Sorry. Still there is something missing. Mahina is oh, I have given wrong actually relation. See, year is okay, S5 is year, okay. Then the salesperson I've selected first. Salesperson should come from S8. Salesperson should come from S8. Okay. Right. You should be able to audit your formulas as well. Okay. तो आपको थोड़ा सीए वाला माइंडसेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अभी ठीक हो रहा है। Part is hard disk S7 and Mahina will be S6. Now we'll get done. अब ठीक है। Now it will work properly. So now you can check how it is going on. Now LN का भी I think 2023 वो था 22 और we have put April month and LED 0 on this motherboard. You can see like this. Getting it? So understood. So basically we are learning to use multiple things together. ये कितना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दिया आपने, एप्लीकेशन बना दिया एक्सेल के अंदर, which is giving you the answer for any criteria anyone can put from your data. Any questions, anyone? Almost 1 hour session we have done. Any questions? Yeah, practice makes the man. I don't know perfect, but confident. If you practice, you will become confident. Happy Teachers Day, sir. Thank you. चलो टीचर्स डे से याद आया, I had written something on the teachers day. Let me read it out for everyone. Basically that is something I posted on my LinkedIn as well, and there was a small celebration which we had in our college. I think my screen is visible.
Yes, sir. So, yeah, some girl has posting. So it is a small cake cutting ceremony. These are the crazy student. One of the student is in the session also, Ramesh. And now let me show you, let me read out something on the Teacher's Day for our teacher. I had so life of a teacher. Teacher की कहानी टीचर की कलम से. So each day I rise to light the flame to guide my students towards their aim. In every heart I plant a dream. No matter how far I help them glean. Through the early dawn I walk with grace to fill young minds in their shared space. With lessons in book and life alike, I show them paths with future spikes. Late nights I sit, my thoughts align, finding answers to questions undefined. For every step my students take, I leave behind a silent wake. My joys I often set aside, from them to soar, for them to glide. No matter the weight I silently bear, my students' success is my true share. Invisible sacrifices, but love so strong. In their journey, I belong. Through every challenge, I stand tall. My heart's desire is their rise after all. Though they may not always see what they truly mean to me, I give my all without a price, for in their growth my joy lies. Thank you, dear students. Your love and respect make it clear that being your teacher is a gift so dear. In this journey, my heart is full, for I love to see your dreams full. So this was a It's poem. very beautiful, sir. Thank you. And this is a message. Thanks a lot to all the amazing students for sharing your love and support and help me become a better teacher, a friend, a philosopher, and a guide because a teacher is nothing without the student. So this was something which I wanted to share with you all. And even my online batch students are very close to me because as I always mention that this is something which I do for my happiness. This makes me happy teaching Excel. Otherwise, people ask me कि सर आप तो सीए हैं तो आपको एक्सेल क्यों पढ़ाते हैं आप? तो इसका आंसर तो मैं नहीं दे पाता हूँ कई बार. बस इतना ही कह पाता हूँ कि हाँ बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ ये सब. So, but that is what, and I don't know how many life I am impacting with this Excel, but yes, sometimes I get some feedback from people. आज टीचर्स डे और एक बर्थडे 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन थोड़ा स्पेशल फील होता है कि हाँ ठीक है, people remember you and people reach out to you or people message you. So I do got some messages today from my students who have taught years back and they still remember. So that is a treasure actually. वो चीज है. Yes, Yuvraj, you want to say something? Excuse me, sir. Yeah. Sir, actually, I want some guidance related to my career. If you give me 2 minutes, Yeah. if you okay. So actually, sir, currently I am pursuing a Bachelor's of Computer Application, but through online mode from GLE University, Mathura, and it is going good because of like academics is known for good there Okay. and yeah, and actually sir but in computer application programming I did, but it is not like uh as I'm not interested in it because
थोड़ा सा सर टिपिकल हो रहा है, एंड जो लॉजिक बिल्ड्स होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। सो मेरा जो आगे का इंटरेस्ट है कैरियर में, वो बिजनेस एनालिस्ट में है, मींस कि लाइक डेटा रिलेटेड। सो सर एमबीए बेटर रहेगा इन? See, I will suggest you one thing. You are doing यस BCA, सर। right? So along with your BCA, whatever you are learning, उसके अलावा आपकी business analyst के लिए ना, there is a roadmap. There is a video on my channel which I have created. 7 technologies you should learn if you want to become a data analyst or a business analyst. And there is one session with Mayur. Mayur, for everyone introduction, he is already acting, working as a data analyst or a business analyst in a company in कौन सी कंट्री में हो तुम? ओमन? नहीं, दुबई। दुबई। हाँ, ही इज इन दुबई। ओके, एंड ही इज वर्किंग इन अ बिग स्टोर एज अ डेटा एनालिस्ट। तो आप लोग मयूर का भी हेल्प ले सकते हैं। एंड वी हैड क्रिएटेड अ we had taken a session on how you should become a data analyst or what is a career. But what I will say is, see, start with Excel, learn SQL. SQL is comparatively easier. Python is there. Then यस सर। Power BI and all these things. जब जब आप ये स्टेप बाय स्टेप चालू करेंगे सीखना, हाँ तो जी। you will have that, you will develop interest and you will come to know कि हाँ, data analytics is a very vast ocean of knowledge. मुझे भी अभी ऐसा लगता है कि इतना आने के बाद भी मुझे बहुत कम आता है। तो बेसिकली यू शुड हैव अ एनालिटिकल माइंडसेट, है ना? क्योंकि यस। अब कोडिंग से आपको डर लग रहा है, बट एआई कैन डू कोडिंग। सो इन 2-3 years there will be no requirement of coders. AI is going to replace the job of engineers जो कोडिंग ओके। करते हैं, ठीक है? तो सर इसका मतलब तो ये है कि एमसीए, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट विल बी नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर माय That करियर। is definitely not a good option, because now see, you do a bachelor and then you do specialization. You learn AI, you learn machine या learning. This is going to be the future. आप obsolete चीजें मत करो. I am teaching MBA students. There are MBA students sitting in the session also. ठीक है? But ओके। and I have taught MBA students from LPU, from GNIRT, many big universities and colleges. बट अभी 2-3 साल बाद भी उनका मैं हाल देखता हूँ, तो कुछ ज्यादा उन्होंने उखाड़ा नहीं है लाइफ में, है ना? तो आई डोंट वांट टू साउंड वेरी लो, और व्हाट आई कैन से, आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट एनीवन हियर बाय सेइंग दिस, बट दिस इज ट्रूथ कि एमबीए करने से आपको बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं हो जाएगा. यू शुड हैव अ स्किल सेट. अगर एमबीए भी कर लिया और स्किल नहीं है, तो इट इज यूजलेस, जीरो के बराबर है वो. ठीक है मयूर, तुम कुछ ऐड करना चाहोगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज वन? या श्योर सर। सो युवराज, जैसे सर ने बताया वैसे ही कि इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। सो कहाँ से चालू करना है, इंटरेस्ट किस में है, अगर वो आप खुद से फाइंड आउट कर लेंगे, सो इट इज मोर इजी फॉर यू टू लाइक कि क्या करना है। सो लेट्स से एक्सेल आप देख रहे हो, सीख रहे हो, एवरीडे क्लासेस जो हो रही है वो ज्वाइन करो, प्लस डेटा को समझने की कोशिश करो कि डेटा क्या होता है, कैसे इसको एनालिसिस करते हैं, वैसे वगैरह वगैरह। सो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कुंभ का मेला तो सबने देखा है, राइट? और कितनी भीड़ रहती है वहां पे, लाखों की। अगर लेट्स से इस चीज को हम लोग अगर विजुलाइज करना चाहे, तो वो भीड़ को कैसे हम लोग एक यानी सेट में वो कर सकते हैं, यानी कैसे उसको समझ सकते हैं। सो लेट्स से 1.5 लाख 3 लाख की भीड़ है, अभी ये डेटा है आपके पास में। अब उसको आप सेग्रीगेट कैसे करोगे? सो फॉर एग्जाम्पल अगर उसके अंदर बता दिया कि 40% उसके अंदर औरतें आ रही है, 10% उसके अंदर मेंस हैं, फिर पुलिस वाले हैं, ये वो ये। सो 1 लाख की भीड़ को आपने किस तरह से डिवाइड किया, या फिर उसको देखा, विजुअलाइजेशन किया, ये। सो डेटा को सेग्रीगेशन करना, डेटा को एटलीस्ट पहले समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल आज जैसे सर ने बताया, तो उस डेटा को आप कैसे रीड करते हो? सो मेरे लिए वो डेटा कैसा है, मैं अगर आप बताऊं, तो ईयर तो उसके अंदर 2 साल ही है, 2 साल है। महीने कितने हैं, तो उसमें 12 महीने हैं। डेट्स कितनी है, तो डेट्स अगर आप काउंट फॉर्मूला जो लगाए, तो यूनिक डेट्स निकाल सकते हो। पार्ट्स कितने हैं? सो डेटा आपके पास में बड़ा है, अगर आप देखोगे 1000-2000 लाइन्स का, तो ऐसे करके आप डेटा को समझ सकते हैं। एंड दिस इज द बेसिक जो सर अभी बता रहे हैं। उसके बाद में सर के पास में एडवांस कोर्सेज भी है,
एक्चुअली जैसे सर ने मेंशन किया, मैं डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट सब कर रहा हूँ, बट इसके बाद भी सर की क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ। सो ये क्या आप है हाँ कि जी। एवरी डे कुछ ना कुछ। पूछता यस। भी मयूर को कि ना व्हाई डू यू कम टू माय क्लास, में तो सब आता है ना, लेकिन यही चीज होती है ना कि इवन इफ यू नो फिर भी आप आ रहे हो क्लास में, तो टू कंट्रीब्यूट टू लर्न, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें लगता है कि हमें आता है, बट एक्चुअली हाउ मच वी नो, एंड देयर इज एग्जैक्टली। एवरी डे हैज अ न्यू स्कोप टू लर्न, मेनी पीपल आर यस। अटेंडिंग मल्टीपल टाइम्स ना. So Mark has is a CA, but he is coming to my session because there are some things which you may get to know new. और एग्जैक्टली। एक्सेल और रिफ्रेश हो अपने जाता आप है में सर। ऐसा टूल है जो अपडेट होता रहता है, तो आई ऑल्सो कीप ऑन एग्जैक्टली। लर्निंग न्यू थिंग्स, so there is no limit to learning actually. और रिफ्रेश हो जाता है हमारा बेसिक जो है वो, सर की क्लासेस में आके रिफ्रेश होता है, क्योंकि हम लोग बहुत एडवांस अभी जा रहे हैं एक्सेल के अंदर ही वगैरह, बट जो बेसिक है वो छूट जाता है पीछे, प्रैक्टिस नहीं होती है। तो ऐसे सेशन ऐड करते हैं सर के उसके अंदर, तो हो जाता है उससे। थैंक यू मयूर सर। थैंक Yeah. थैंक नो इशू। And you थैंक यू can सर। share this information with your friends also, because श्योर अगर आप सर। बीसीए कर रहे हैं तो आपके और भी फ्रेंड्स होंगे जिनको सिमिलर डाउट होगा, या दे माइट नॉट बी कॉन्फिडेंट विद कोडिंग एंड ऑल, so this is another option, this is another line which is opened up, and it is going to stay for next 5 10 15 20 years, है ना. बट आपको एआई एंड जनरेटिव एआई ये सब यूज करना ही होगा, दैट दिस इज द फ्यूचर. If you are not using this, you will become redundant after some time. And then believe me, ये कोडिंग वोडिंग ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है. सर अब जब से आपका एक्चुअली मैंने लिंक्डइन के थ्रू मुझे पता चला था कि आप ऐसे क्लासेस भी लेते हैं, सो मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। एंड सर इफ अगर